रश्मि देसाई ना सिर्फ अंकिता की दोस्त है बल्कि वो सुशांत को भी बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है अंकिता के सपोर्ट में, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो लिखी है कि सुशांत और अंकिता का रिश्ता जो है क्यों टूटा, कैसे टूटा, इन सारी बातों की ओर जो है उन्होंने इशारा किया है। क्या कहा है रश्मि ने, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। रश्मि ने बहुत बड़ा पोस्ट लिखा है कि जो सब चल रहा है कि कौन, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने कहा कि मैं अंकिता की बात करने यहाँ आई हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अभी अंकिता की बात करूँगी, मैं किसी की साइड नहीं हूँ अभी। कमिंग टू द पॉइंट, अंकिता लोखंडे इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. I, Sushant and Ankita, we all started our career at the same time. I am really happy that I knew Sushant and Ankita is a very close friend. And the one thing I deeply feel about in 2020 is that we have lost our talent, we have lost our gem. Few people are facing a personal loss, a few are seeking it in a different way. I completely have no hatred towards Riya Chakravarti as a woman. And what media has been doing, they are not following any kind of general rules or COVID rules. This is a kind of harassment. तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में रिया के लिए भी कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन वो अंकिता का जो पक्ष ले रही हैं, अंकिता को क्यों बोल रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, मैं बोलूँगी, क्योंकि उसके पीछे उनका एक रीज़न है। वो सुशांत और अंकिता को तब से जानती हैं जब उन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और इसीलिए अब वो आगे लिखती हैं, I am not at all in anyone's favor right now, but what I am seeing, I want to make it clear that Ankita and Sushant relationship was not toxic at all. It was Sushant decision. ये सुशांत का डिसीजन था. He wanted to opt out of it for whatever reason or situation. Obviously, it is very personal. Ankita and Sushant have been supporting each other even after they were not together, and Ankita is very close to his family after the breakup also. And today so-called people are claiming, who don't even know Sushant or the entire situation or even about Riya, are putting her into a bad light. I have no idea what is the reason and why, but whatever I am seeing in the media is becoming very toxic for me, as the right news is not reaching any of us. Ankita is very clearly trying to say that even she wants to find out why and what was the reason for what all happened. She has nothing to do with the people who are trying to take and stand right now. Where were they when it all started is her question, which is definitely a valid one. If you are saying we are friends, then where were you when she really needed you? I think you all have no idea that Sushant was also trying to make his space in this industry, and at that moment it was only Ankita who backed him up and supported him in his journey. When Ankita was with him, and she was already a very big name and still is, and I don't think that she is holding any kind of grudge towards anybody right now, as currently she is not in the right state of mind, plus she has been seeing his struggles, so her pain is also very different than yours. From 2016 to 2020, of course, there might have been a lot of changes, and I am sure people have only seen the good things because we only like to see the thing with the beauty filter, and we don't want to see bad things or accept the failure. And even if they do see it, they criticize it rather than accepting the fact. Well, I think we should keep it more clear now. People are facing consequences and whatever they are going through for a reason. But we do have a question, and I think Ankita is just raising a question because the Sushant she knew was not facing all this at all, and just like his family, she is to know, वो सिर्फ जानना चाहती है as well कि उसके साथ क्या हुआ था, और ये उसका हक भी है. आगे वो लिखती हैं, people mind has become so small that they don't realize and cross their line. I really respect and understand their pain, but blaming someone without any knowledge is not right. He was not a star when she was with him, so please
Do not comment on her relationship and he loved whom after Ankita or even after that. It is one gem who has left us and we should keep that in mind. Now, this case is moving forward and getting some other angle, so let's not dig out things. Don't ruin someone's name when you don't know the reality and 2-minute fame, my darling. अंकिता लोखंडे डजंट नीड दैट, शी ऑलरेडी इज़ अ स्टार. अंकिता लोखंडे सॉलिड वुमेन. उन्होंने कहा कि मेरी अंकिता को जो है ज़रूरत नहीं है. दरअसल रश्मि देसाई उस समय से इन दोनों की दोस्त है जब सभी ने एक साथ स्ट्रगल शुरू किया था. रश्मि का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय उतरन सीरियल आता था और जो है सभी आपस में एक दूसरे को जानते थे. रश्मि ने साफ साफ लिखा है कि सुशांत जो है इस रिलेशन से आगे बढ़ना चाहता था, उसने जो है ये रिलेशन तोड़ा था. लेकिन आज तक जो है ना अंकिता ने इस बारे में बात की, ना सुशांत ने, किसी ने भी ये नहीं बात की. बहुत ग्रेसफुली अंकिता ने अपने ब्रेकअप को जो है हैंडल किया था और इसी बात का जिक्र जो है बहुत सारे लोगों ने भी किया. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब तक अंकिता के साथ सुशांत था वो हमेशा खुश थे. और अब जो है रश्मि देसाई भी आगे आई हैं अंकिता को सपोर्ट करने के लिए. और उनका बयान इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दोनों को जानती थी. उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं रिया के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस अंकिता को जानती हूँ वो सुशांत की बहुत करीबी थी और मुझे पता है कि उसका क्या पेन होगा और वो क्यों जो है जस्टिस की मांग कर रही है.